friends, welcome to Chemoholic. We are going to discuss about chemical reactions and equations. So this is the chapter number 1 of grade 10 chemistry, and we are going to discuss about it, and we'll discuss about in detail what are the chemical reactions, how to write chemical equations, how to balance chemical equations. Even in this video note we are going to discuss about the what are the actually chemical reactions and their types. Okay, so let's start this session. Before starting the session, please take your notebook and one pen, so you'll be able to note it down your short note. You'll be able to make your short notes. Okay, so let's start. As we can say, the chemical reactions, what do you understand from chemical reaction? So chemical reaction is nothing but about change, the changes happening in our surrounding. You can see the many changes occur in our surrounding. We can see like ripening of mango, from raw mango to ripened mango. Even you can see the changes occur, like the ice is getting melt to convert it into water, or you can see that milk is converting into curd, or you can see the souring of milk, rancidity of the food, spoilage of the food. There are many changes you see around you. These all changes are called as a chemistry. Like these all changes are called as a chemical reactions. But we should understand that which type of these changes are. Okay, so the changes are majorly out of the two types: physical change and chemical change. What are the physical change? Physical changes are the changes which occur only in case of their physical state, only in case of their physical phenomena, not the component change. Okay, let's understand this with the help of one example. Like if I'm having water, we can say like ice in form of ice and in form of liquid water. Both are containing same content, that is H2O, but in case of ice it is in solid form, and in case of in case of water it is in liquid form. So here we can say that changes is occurring, but these changes are just a physical change. In case of physical change, no new component will form. ओके, सो यहाँ मेजरली बात ये आती है कि केमिकल चेंज है क्या, केमिकल चेंज है क्या. सो केमिकल चेंज को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना होगा कि कोई भी एक ऐसा चेंज जो परमानेंट चेंज हो, कोई भी ऐसा चेंज जो परमानेंट चेंज हो, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं. जैसे कि अगर दूध से हमने दही बना लिया, दूध से हमने दही बना लिया, दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता. इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज. Chemical changes are irreversible changes, and in this case the new substance always form. For example, if I am taking sodium metal with chlorine gas, so sodium metal is reacting with a chlorine gas to form sodium chloride. The nature and the properties of sodium chloride will be totally different than the sodium and chlorine, their respective element. How? We'll see. In case of sodium is very reactive in nature. अगर आप सोडियम को पानी में पुट करते हैं तो अचानक ये आग पकड़ लेता है, बहुत विगरस रिएक्शन देता है सोडियम. और क्लोरीन is a kind of, it's toxic gas, it's choking gas. Once you'll breathe, you'll not be able to breathe it. It will be giving burning sensation to your eyes. So this is basically the nature of chlorine as well as the sodium. But when they react together, when they are reacting together, they form a stable compound, sodium chloride, which we are using in our daily life, in our daily routine. हम अपने टेबल सॉल्ट के रूप में यूज़ करते हैं उसे. नमक, जो नमक हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, वह नमक सोडियम क्लोराइड होता है. सो बेसिकली हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि सोडियम क्लोराइड की जो प्रॉपर्टी है उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से टोटली अलग होती है. द प्रॉपर्टी ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज टोटली डिफरेंट दैन द रिस्पेक्टिव एलिमेंट. सो दैट टाइप ऑफ चेंजेस कैन बी कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज. So chemical change are associated with chemical reactions are associated with the chemical change. Whenever a chemical change occur, chemical reaction is said to takes place. Okay, so if any changes are happening, like we can say we saw the changes were happening in case of sodium chloride,
changes were happening in case of souring of milk, changes are happening in case of ripening of the fruits. So these all changes are termed as a chemical reaction. So generally chemical reactions are irreversible in nature, and in this case new substance always form. तो आपको दो चीजें यहाँ ध्यान रखनी है, chemical change and physical change. Means changes occur in two natures, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ मेन phases will change, not the component change. Component will remain as it is. इसका एग्जांपल मैंने दिया कि वाटर को अगर हम आइस के फॉर्म में देखते हैं तो वो H2O ही होता है, लिक्विड के फॉर्म में देखो वाटर के फॉर्म में तो भी वो H2O ही होता है, और स्टीम के फॉर्म में अगर आप देखो तो भी वो H2O ही होता है. तो इन ऑल थ्री केसेस द मेन कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट इज नॉट चेंजिंग, मेन कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड इज नॉट चेंजिंग, only the properties, physical properties will change in case of physical changes. And chemical changes, as I told you, like in case of chemical changes there will be a change occur in case of permanent changes will be there, and they are usually irreversible in nature. Okay, how to identify a reaction has happened. आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? इसे पहचानने के लिए आपको ये जानना होगा कि उसके अंदर किस तरह का चेंज हुआ है. जैसे यू कैन से द चेंजेस हैपन इन फॉर्म ऑफ कलर, और चेंजेस हैपन इन फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस, or you can say changes in temperature or changes in state can be termed as a chemical reaction has happened. Change in color का मतलब ये होता है कि अगर कोई सब्सटेंस ग्रीन कलर का था, आपने कोई सब्सटेंस ऐड किया और वो येलो कलर या कलरलेस हो गया या कोई अलग कलर चेंज हो गया, तो इसे हम कहते हैं कलर चेंज हो गया है, और एक टाइप का ये रिएक्शन है. इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस में आप लोगों ने देखा होगा कि अब पानी के अंदर अगर इनो के पैकेट डाल दें तो बबल्स निकलने आते हैं, फिजेस निकलने लगते हैं. तो फिजेस किस चीज़ के फिजेस होते हैं? वो एक गैस के फिजेस होते हैं. तो द इवोल्यूशन ऑफ गैस इज हैपनिंग. अगर आप आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, जैसे कि किसी एसिड के अंदर कोई मेटल्स अगर आप पुट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर अगर आप जिंक पाउडर या जिंक डस्ट पुट करते हैं, तो देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ गैस इज हैपनिंग. इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई बता सकता है कि वो कौन सी गैस होती है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, which gas is coming out when the zinc is added to hydrochloric acid? But obviously it is hydrogen gas. आप उसको चेक कैसे कर सकते हैं? आप उसको चेक करेंगे अगर बर्निंग स्प्लिंट आप उसके पास ले आएंगे, बर्निंग मैस्टिक को, जलती हुई माचिस की तीली को उसके पास अगर ले आएंगे तो एक पॉप साउंड देगा. इससे आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है. अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता तो कैसे पता करते? तो उसको पता करने का एक तरीका ये है कि आप जलती हुई माचिस की तीली को उसके पास ले आएंगे और जैसे ही उसके पास पहुंचाएंगे वो तुरंत बुझ जाएगी. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी गैस है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑल्सो इंडिकेट द रिएक्शन हैज हैपन. एक चीज और आती है कि चेंज इन टेम्परेचर. कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनको अगर पहले से टच करोगे तो आपको गर्मी फील नहीं होगी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा या डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन आपको जब आप ऐड करने के बाद, कोई रिएक्टेंट जब ऐड करने के बाद, रिएक्शन होने के बाद आपको टेम्परेचर चेंज फील होता है. जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक ग्लास आप पानी लीजिए, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ पैलेट्स डालिए. जैसे ही आप पैलेट्स को मिक्स करेंगे, आप टच करिए बाहर की तरफ, आपको पता चलेगा कि बाहर की तरफ टेम्परेचर बढ़ चुका है. इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो चुके हैं. सो रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है कि चेंज इन टेम्परेचर. अगर आपने चेंज इन टेम्परेचर आइडेंटिफाई किया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पे रिएक्शंस हुए हैं. एक और प्रॉपर्टीज आती है इसमें, चेंज इन स्टेट. आप ये कैसे पता करेंगे कि स्टेट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि कोई सब्सटेंस लिक्विड में है, आपने रिएक्टेंट ऐड किया और वो सॉलिड बन गया, या फिर कोई सब्सटेंस सॉलिड था, आपने उसमें सब्सटेंस ऐड किया और सडनली वो लिक्विड बन गया. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उसके स्टेट में चेंजेस हैं. इसका मतलब ये है कि उसके फेज चेंज हो रहे हैं. सो दीज ऑल आर फ्यू साइन टू इंडिकेट द रिएक्शन इज हैपन और नॉट. दैट इज कलर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट. दिस ऑल criteria are there. With the help of that, these are main 5 sign to indicate the reaction has happened or not. Okay, अगला टॉपिक हमारा आता है वर्ड इक्वेशन.
what is the word equation? Word equation is an equation to describe our chemical change. For example, suppose अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मीथेन को हमने combust किया, if I'm combusting methane, I'm getting carbon dioxide and water molecule. अगर ये मेरा रिएक्शन है तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किताबों में कैसे लिखेंगे? आपकी नोटबुक में अगर हमें लिखना होगा तो हमें ये पूरे स्टेटमेंट पैराग्राफ पैटर्न में नहीं लिखने होंगे। इसको अगर हमें तो उसको हम सिंबलाइज फॉर्म में हम उसे लिखते हैं। जनरली हम कैसे लिखेंगे? मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये पूरा स्टेटमेंट बनता है। और इसे इंडिकेट कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है? इसके लिए वर्ड इक्वेशन जानना बहुत जरूरी है। सो वर्ड इक्वेशन is an equation which describe the chemical change using the name of reactant and product, which will describe the chemical change, which will explain the chemical change using the name of reactant and product. For example, name of reactant is methane, name of reactant is oxygen, and product is carbon dioxide, and product is water. So what I can do, I can just put methane plus water, giving out the carbon dioxide and water. Okay, so in this case, left hand side one can be called as a reactant and right hand side one can be called as a product. So you can see on the slide there is what methane treated with 2 moles of oxygen giving out carbon dioxide and water. Here methane and oxygen are reactant, they are undergoing combustion. Methane is undergoing combustion to give out the carbon dioxide and water molecules. So word equation is basically which describe the chemical change using the name of the reactant and product. Okay, in case of chemical equation, the simplest form to describe a chemical equation in a shorter form by writing in the form of equation. So to write the chemical equation, see, if I am telling you about methane undergoes combustion to form magnesium undergoes combustion to form magnesium oxide. If I'm talking about this, it means I'm talking about chemical reaction. But if I want to write the chemical equation, how to write the chemical equation? That's a question. How to write chemical equation? So chemical equation is nothing but it's a simplest form of symbolic representation of chemical reaction. It's a simplest form of symbolic representation of chemical reaction in a shorter form by writing its symbol. Okay, so magnesium symbol is what? Mg. Oxygen symbol is O2, and if we'll add them up, magnesium plus oxygen giving out magnesium oxide. You can see there is a small arrow. You can see there's an arrow over here. You can see the arrow over here. So this arrow indicate that the reaction, this separates between the reactant and product. So left hand side you will be getting, and you will be getting on right hand side. So left hand side will be called as a reactant and right hand side will be called as a product. So reactants are written always in the left hand side and products are always written on the right hand side. An arrow is placed between that shows the direction of reaction. You can see this kind of arrow is shown over here. So this arrow indicates the direction of the reaction. It means this is reactant and this is product. So from reactant to product the reactions are happening. Okay, in case of chemical equation, equation must represent the known fact. Some of the fact it explains. Okay, what are those facts? The equation must contain the correct formula of reactant and product. It must contain the correct formula of reactant and product. What is mean by the correct formula of reactant and product? For example, if I want to explain you the magnesium reacting with oxygen to form magnesium oxide, if we can say magnesium undergoes combustion to form magnesium oxide, and the formula for magnesium oxide is MgO, but you are writing Mg2O or MgO2 or 2Mg2O2 or something XYZ, so which is not the correct formula, then your equation will be wrong. To write the chemical equation, we should indicate with the correct formula of the reactant as well as the product. Okay, one more thing is what in this case of chemical equation, the law of
conservation of mass must be satisfied. In this case, law of conservation of mass must be satisfied. What is law of conservation of mass? Okay, law of conservation of mass is a mass is neither created nor destroyed. It will be just converted into one form to another form. So what we can say, the total mass of universe is remain constant, which is not changing, which will remain constant. You cannot create mass, or you cannot destroy mass. It will just convert in one form to another form. For example, magnesium was having some 24 gram mass. Oxygen O2 was having some 32 gram mass. So reactant is what? 24 plus 32 will be equal to the mass of product. Means it will be equal to 2 moles of magnesium oxide. So magnesium oxide mass, 2 moles of magnesium oxide mass will be equal to reactant mass. So here they want to explain you that chemical equation is what? The mass of reactant side should be equal to mass of product side. So mass is neither created nor destroyed. It will just transfer into one form to another form. That is called as a law of mass conservation. Okay, showing phase in the chemical equation. How to identify the phases are happening in case of chemical equation. So we can see that there are the multiple phases are there. How many phases are there? Generally, the students are aware about only 3 phases: solid, liquid, gases. Let me clear out. There are 5 phases are there. There are 5 phases are there. What are those 5 phases? The phase number 1 is solid. Phase number 2 is liquid. Phase number 3 is gas. Phase number 4 is Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. And phase number 5 is what? It's plasma state. Okay, plasma state. We'll understand with the help of this given equation. Suppose if I'm having ice. Ice is what? It's nothing but H2O solid. If I am heating this ice, I'll be getting that ice, there will be the water liquid. I'll be getting water, which will be the H2O liquid. And if I'm further heating, I'll be getting H2O steam or H2O vapor. Okay, what will happen if I'll continue to heat the gases? If I will continue to heat this further, what I am going to get? What I'll be getting? But obviously it will remain in the gaseous state, but the H2O will start dissociating. Means हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया कि अगर वाटर मॉलिक्यूल को आगे और ज़्यादा एनर्जी के साथ अगर आप हीट करते हैं तो H2O क्या हो जाएगा? H2O और टूट जाएगा और H2O टूट के कैसे हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस में बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस में बन जाता है. दिस स्टेट इज कॉल्ड एज अ डिसोसिएशन स्टेट. मीन्स वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस एज अ प्लाज्मा स्टेट. नाउ इफ वी आर कंटिन्यूस हीटिंग, अगर आप और हीट करते जा रहे हैं, इफ यू आर कंटिन्यूसली मोर हीटिंग इट, व्हाट विल हैपन नाउ? हाइड्रोजन जो गैस बना था वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, निकाल देगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा. हाइड्रोजन विल टर्न अप इनटू H+ or it will undergoes ionize. Same way oxygen will undergoes ionize, and once they are getting ionized in a form of gases, can be called as a ionized form of gases, and this state is called as a plasma state. A new state will generate after heating too much. If you are heating any substance, it will turn up into gas. If you are heating further, it will undergoes dissociation, atomization, ionization. That ionized state of the gas is called as a plasma state. Now question arises, what is Bose-Einstein condensate? Okay, in case of Bose-Einstein condensate, now in the previous example just we saw, in that case we were heating. पहले जो एग्जाम्पल हमने देखा उसमें हम सब हीट कर रहे थे और हीट को टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे और जिसकी वजह से डिसोसिएशन हमने देखा. लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे कूल करने पे क्या असर होता है. तो once the water molecule is getting freezed, once water molecules are getting freezed, the molecules are getting freezed and they are getting packed together. Once they are getting packed together, once they are getting freezed, so they are not moving. Now what will happen if you cool it to the absolute zero? If you are cooling it till absolute zero, what will happen? The molecular motion of the
particular compound will be seized but electronic motion will be continued. इसका मतलब ये होता है कि जो H2O खुद H2O घूमता था, वाइब्रेट होता था, वो सीज्ड हो जाता है, रुक जाता है, फ्रीज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो होते हैं वो वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं, वो वैसे के वैसे ही घूमते रहते हैं, सीज नहीं होते हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं. इसका मतलब ये होता है कि every material start acting as a superconductor at that stage. So that stage is what absolute zero, we can say absolute zero, or we can say that is what absolute zero टेम्परेचर पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है. तो ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट. Bose-Einstein condensate state. Two scientists' name is involved over here, Bose and Einstein. Okay, we'll go ahead with the phase. Balanced chemical equation. Now what is balanced chemical equation? Balanced chemical equation is again work out on the basis of law of mass conservation. According to law of mass conservation, total mass must be equal to both sides of the equations. As I told you, there is an arrow indicate that reactant and product. So in case of this arrow, reactant and product, in both sides the mass of reactant should be equal to mass of product. As well as we should know about the mass of reactant, means number of atoms present in reactant side and number of atoms of that element present on product side should be same. That is the balance equation. Means what, if you want to balance the equation on either side of the reactant and product, you should get the reactant and product should be same. For example, in given example, you can see the 2 moles of magnesium are added with oxygen to gives us magnesium oxide. Here in the left hand side you can see the magnesium is 2, so right hand side also the 2 magnesium. In left hand side 2 oxygen, so right hand side also the 2 oxygen. It means that number of moles of number of atoms present in reactant side should be equal to number of atoms present in product side of that particular element. इस बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए ये क्लिप आप अच्छे से देख सकते हैं. जैसा कि आप तराजू का इस्तेमाल हम सब करते हैं, तराजू के इस्तेमाल में दोनों पलड़ों पे कुछ ना कुछ वजन रखे जाते हैं, और जब उसे बैलेंस कब कहा जाता है, जब दोनों पलड़े इक्वल हो जाते हैं. तो यहाँ पर पहले इमेज में अगर आप देखेंगे तो पहले इमेज में 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है एक साइड, और दूसरे साइड हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन है. जबकि आप देखेंगे तो ये बैलेंस नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड भारी है और राइट हैंड साइड हल्का है, जो कि अनबैलेंस है. लेकिन आप राइट हैंड साइड, अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, तो राइट हैंड साइड में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन और आपको ऐड करना होगा. तो आप राइट हैंड साइड में जैसे ही ऐड करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा. सो बेसिकली बैलेंस an unbalanced chemical equation is what is nothing but what addition, if it is unbalanced you need to add the number of required element on the either side to make it balance. You can see one more example on your screen, that is CH4 plus 2O2 gives us CO2 and H2O. इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, मीथेन undergoes combustion to give carbon dioxide and water molecule. So you can see in the image, you can see one methane molecule is reacting. You can see one methane is reacting with a 4 atom of oxygen to giving out, or 2 molecule of oxygen giving out carbon dioxide and water molecule. So you can get over here, if you count properly, you will be getting the one carbon atom, 4 hydrogen atom and 4 oxygen atom. यहाँ पे प्रोडक्ट में भी उतने ही कार्बन, उतने ही हाइड्रोजन और उतने ही ऑक्सीजन एटम आपको मिलेंगे. तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट साइड. दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशंस. विजुअलाइजिंग केमिकल इक्वेशन, ये पहले इमेज में अगर आप ध्यान से देखें तो 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो रहा है और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है. नया प्रोडक्ट बनने के दौरान आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें टूट के निकलती हैं और कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं. जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ऐड हो जाएं, कुछ चीज़ें उसमें वोलेटाइल चीज़ें निकलती भी हैं. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी, टू एक्वायर द मोर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और टू फॉर्म द मोर स्टेबल कंपाउंड, दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग. अगर आप दूसरी इमेज की तरफ ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इमेज को समझने के लिए आपको एक कोलिजन थियरी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा. आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक इन आवर सराउंडिंग पीपल से
21% oxygen gas is there, 74% nitrogen gas is there, and many other gases are there like carbon dioxide, hydrogen, helium, and other gases are there. Now my question is there, why don't these all gases are reacting? Why not these all gases are reacting together and forming compound? I mean हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो वो रिएक्ट करके वाटर बन जाने चाहिए, पर वो वाटर क्यों नहीं बनते हैं? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से वो वाटर नहीं बनते हैं? तो इसका एक ही रीज़न है, इसका मेन रीज़न ये है कि जब जब दो गैसेस, व्हेन टू गैसेस और टू रिएक्टेंट आर कोलाइडिंग टुगेदर, दे नेवर लीड आउट द प्रोडक्ट, दे ऑलवेज नॉट लीडिंग आउट द प्रोडक्ट। इट मीन्स जब कभी भी दो या दो से अधिक गैसेस एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे। जब वो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं तभी रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये है कि इन आवर एटमॉस्फेयर वी आर गेटिंग मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट्स और मिलियंस ऑफ गैसेस आर रिएक्टिंग टुगेदर, कोलाइडिंग टुगेदर, बट दे आर नॉट लीडिंग आउट द रिएक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट गिविंग आउट द इफेक्टिव कोलिजन। Now the concept comes, what is effective collision and what is ineffective collision? Effective collision and ineffective collision मतलब ये होता है कि जब दो गैसेस एक दूसरे से टकराती हैं, दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसमें अगर चेंजेस नहीं होते हैं, अगर कोई चेंजेस नहीं होता है, तो उसे इनइफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है। और वो अब क्वेश्चन आता है कि चेंजेस लाने के लिए क्या होगा, कैसे करेंगे चेंजेस? तो उसके लिए दो क्राइटेरिया होती है, एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन। जब दो गैसेस आपस में टकराती हैं और वो किसी सफिशिएंट एनर्जी से, इतनी सफिशिएंट एनर्जी से टकराती हैं कि उनके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, तो वो रिएक्शन लीड कर देती हैं। इसका मतलब तब रिएक्शन हो जाता है। और अगर सफिशिएंट एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगा पाती हैं, तो रिएक्शन नहीं होता है। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू initiate the reaction, to happen the reaction, is called as the activation energy. Okay, and what is the orientation? If we'll talk about orientation of the molecule, then you can see in this image the first two cases no reactions are happening, nothing, no changes are happening. But you can see in this cases, the first two cases no reactions are happening, but in third case reaction is happening. Just because of that, the orientation of this O3 is just in a specific direction and the effective collision is happening. So what do we mean? अगर इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल की तरफ से समझाऊं, तो इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जैसे कि आप वॉल को धक्का दे रहे हो लेकिन वॉल खिसक नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट उतना सफिशिएंट फोर्स नहीं है जिससे वो हिल सके, जैसे वो मूव कर सके, तो आपका कोलिजन जो हो गया वो इनइफेक्टिव कोलिजन हो गया। आपको इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन से धक्का देना होगा, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी से धक्का देना होगा, तभी वो रिएक्शंस होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते हैं तब तक रिएक्शन नहीं होते हैं। सो टू लीड द रिएक्शन देयर शुड बी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल एज द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। कहीं पे भी कोई भी बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर आपके पास, आप समझिए कि अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो दो बॉन्ड से अटैच है, एक ऐसा एलिमेंट है जो दो बॉन्ड से अटैच है, तो एक बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है, एक बॉन्ड वीक बॉन्ड है। अगर आप स्ट्रांग बॉन्ड की तरफ हैमर करेंगे तो आपके रिएक्शन के चांसेस बिल्कुल कम है, लेकिन अगर आप वीक बॉन्ड की तरफ हैमर करेंगे तो आपके रिएक्शन के चांस ज़्यादा है। इसीलिए जो बॉन्ड वीक होते हैं, जो बॉन्ड जिनके अट्रैक्शन कम होते हैं, वीक होते हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं और वहीं से रिएक्शन होता है। इसीलिए अगर आपको एक क्वेश्चन आएगा आगे कि सर यही बॉन्ड क्यों टूटा, ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं टूट रहा है, तो इसका एक ही रीज़न है कि वो वाला बॉन्ड जो टूटा है वो अनस्टेबल होगा या फिर वो बॉन्ड वीक होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। Now types of chemical reaction. In case of types of chemical reactions, we can see
types of chemical reactions, we can see there are the various types of chemical reaction: combination reaction, decomposition reaction, we can say single displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. और भी कई टाइप के रिएक्शन हैं, बट आपके सिलेबस के अनुसार ये 5 रिएक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। ये अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा इनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी। तब तक के लिए आप सब पिछले इस वीडियो को देखें अच्छे से, और उसके ऊपर छोटे मोटे अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो बना लें, और इससे इस टॉपिक को रिवाइज करें। अगले वीडियो नोट में मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और रेंसिडिटी, कोरोजन। इस चैप्टर को हम करीब 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद।